Assalamu alaikum. My name is Pashmina Shabi and my roll number is BP1650173. My topic is an anti-epileptic drug known as ethosuxamide, which belongs to the anticonvulsants. As we know that epilepsy is a common childhood brain disorder, the only effective drug which is used as first drug of choice in childhood brain disorder is known as ethosuxamide. It is a well-known drug because of lowest sedation और जिन लोगों को जीआईटी इफेक्ट जो लोग जीआईटी इफेक्ट को टॉलरेट कर सकते हैं उनके अंदर अनकॉम्प्लिकेटेड एब्सेंट सीजर्स के लिए भी हम इथोसक्सामाइड यूज कर सकते हैं. इट इज यूज एज अ फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन treatment of absent seizures. Mechanism of action: ethosuxamide reduces the propagation of abnormal electrical activity within the brain, presumably by inhibiting T-type calcium channels. In simple words, it is the blocker of T-type calcium channels. It works affects GIT distress, lethargy, headache, behavioral changes, drowsiness, nausea, sedation, etc. Abrupt discontinuance of drugs may cause seizures, toxicity, dizziness, headache, and sometimes acute overdoses may produce CNS depression, including coma with respiratory depression and nausea and vomiting also. Alternatives, as it is the first drug of choice, अगर इथोसक्सामाइड उसको ट्रीट नहीं कर सकता तो हम वॉल्पोरेट यूज कर सकते हैं. अगर वॉल्पोरेट भी इफेक्टिव नहीं है तो हम क्लोनाजीपैम एंड लेमोट्रिजीन यूज कर सकते हैं. बट फर्स्ट द drug of choice is ethosuxamide then valproate. Dose variation and adjustment: ethosuxamide at a dosage of 15 to 20 mg per kg per day or 250 mg twice daily. The daily dose can be increased by 250 mg every 10 to 14 days as necessary to control the seizures. क्योंकि जो बच्चों में इथोसक्सामाइड की एवरेज हाफ लाइफ होती है वो अप्रॉक्सिमेट 30 आवर्स होती है. A delay of 10 to 14 days between the dosage increments allows 7 days of for the achievement of steady state and the 7 days for the assessment of the response. Case study: a 7-year-old female presented with brief episodes of staring that lasted for a few seconds. These episodes recurred multiple times throughout the day. She was taken to her primary care physician when she suddenly stopped walking in the middle of busy intersection. She appeared to abruptly freeze and was motionless until her parents noticed that she was lagging. They returned to assist her safely across the street. According to her parents, she had been an excellent student. However, recently they had been receiving notes from her teachers reporting that she had been periodically staring into space. She appeared as if she were daydreaming. They were significant enough to interfere with her ability to attend to her classes. The symptoms became especially alarming when she experienced an episode associated with urinary incontinence at school. She had no other complaints and was developmentally and neurologically normal. On examination, laboratory studies were unremarkable and she was referred for a routine EEG. Subject: जो पेशेंट की चीफ कंप्लेन है उसमें है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू स्टे फोकस्ड, मल्टीपल सीजर्स, नो पास्ट हिस्ट्री, currently do not use any medication. Objective: normal neurological condition but sudden stop in motion without falling. Sudden stops all activity, look like as just a blank look, no other laboratory results, and EEG shows irregular waves. जब कोई नॉर्मल पीपल जब कोई नॉर्मल पीपल होते हैं वो ईईजी अगर करवाते हैं तो उनकी जो इस तरह से वेव्स जो होती हैं यहाँ पे भी इसी तरह से नॉर्मल वेव्स जो होती हैं. लेकिन जब कोई सीजर पेशेंट, एपिलेप्टिक पेशेंट ईईजी करवाता है तो उसकी जो वेव्स होती हैं वो एबनॉर्मल वेव्स होती हैं, इरेगुलर वेव्स शो करती हैं. Assessment: from subjective and objective evidence, diagnosed with childhood seizure disorder, absent seizures.
The EEG shows a burst of 3.5 to 4 Hz generalized spike and wave discharges. Patient is diagnosed with epilepsy. This EEG would be diagnostic of a typical absence seizures. Plan 500 mg per oral every day initially, may increase by 250 mg every 4 to 7 days, generally not to exceed 1.5 gram per day in divided doses. Then brain scans, just like MRI and CT scans. MRI और सीटी स्कैन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी स्कार टिश्यू या ट्यूमर हो जिसकी वजह से सीजर्स हो रहे हो, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट हम कराते हैं। ब्लड ब्लड टेस्ट में हमें सोडियम इम्बेलेंस का पता चलता है, या किडनी या लिवर डैमेज का पता चलता है, या डायबिटीज का भी पता चल सकता है, जिसकी वजह से कभी कभार सीजर्स होते हैं। If ethosuxamide is not effective, then we will go through the lamotrigine with the dose of, sorry, it is the dose of 0.3 mg per kg per day, 1 to 2 divided doses for 2 weeks, titrated upward over 4 to 6 weeks, usual maintenance dose 4.5 to 7.5 mg per kg per day in 2 divided doses, maximum dose 300 mg per day, and will adjust according to patient condition. जब आगे देखेंगे कि ईईजी हम उसको दोबारा रेगुलर हम उसको कहेंगे कि आप करवाएं, उसके हिसाब से हम उसकी आगे डोज एडजस्ट करेंगे। पेशेंट काउंसलिंग हम उसको बताएंगे इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शन characterized by current सीजर्स और इनकॉन्शियसनेस। और हम उसको बताएंगे कि ये जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो आप बिफोर और आफ्टर मील ले सकते हैं, और रेगुलर मेडिसिन आप लें और बैलेंस डाइट के साथ। अगर आपसे कोई डोज मिस हो गया है और आपको आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आपको याद आए, तो आप फौरन से वो ले लें। अगर आपसे वो स्किप हो गया है और आपके नेक्स्ट डोज का टाइम हो गया है, तो आप वो स्किप कर लें और नेक्स्ट डोज आप ले लें, क्योंकि ओवरडोज आप नहीं ले सकते, यानी डबल डोज आप नहीं ले सकते, क्योंकि डबल डोज से या ओवरडोज से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज, चेंज इन कॉन्शियसनेस, इरेगुलर फास्ट और लो और शेलो ब्रीथिंग, और पेल और ब्लू लिप्स, फिंगरनेल्स और स्किन्स। थैंक यू।